Overseas Friends of BJP has started a new journey by registering voluntarily with DOJ under FARA. In this process, OFBJP is registered as 501c4 IRS status. Now OFBJP USA became the official representative of BJP in the US. So OFBJP has been actively engaged with US lawmakers, think tanks, academia, and communities in fostering US-India strategic partnership, facilitating and conducting advocacy on the cause of US, India, and Indian American communities. OFBJP has mobilized NRIs and Indian diaspora for election campaigns in both state and national elections in India. And OFBJP volunteers have been working tirelessly supporting charitable activities and helping raise funds and even during the pandemic. My good friend, Honorable Member of Parliament Sudhanshu ji, my friend H.R. Shah, and President Overseas BJP Krishna Reddy, and dear friends. Well, Dr. Sudhanshu Trivedi is, though he's a PhD in engineering, but it looks like he is a PhD in diplomacy and diplomat. He has traveled, he's been a part of the different delegation, variety of the delegation from the government of India, or even before the BJP came in the power. He's been to so many meetings, delegation in United Nations, USA, European countries, Japan, so forth. So he knows foreign relation of the government of India much more than anyone else. Here also he comes to USA quite often, visits university, Princeton University, then Woodrow Wilson School, University of California, and other university where he gives his vision, or he explains the vision of government of India and vision of our beloved Prime Minister Narendra Modi. So let's welcome our good friend Dr. Sudhanshu Trivedi with a big applause and with a standing ovation to welcome Dr. Sudhanshu Trivedi. He is not only a spokesperson of BJP, as you can see that even Ukraine-Russia war, even though India's neutrality, still the European country and Japan and China love to embrace love to do business with the India. That shows, and that credit goes to a great spokesperson like Dr. Sudhanshu Trivedi. So Sudhanshu ji, on behalf of all Indian Americans, I would like to again welcome you here, and we are anxious to hear your vision and thereby vision of the Prime Minister Narendra Modi. Thank you.
प्रधानमंत्री बने उससे पहले I remember in 2013 visits when we met several senior persons, so congressmen, chairman of the committees, chairman of the foreign affairs committee, even the speaker of the senate, they were having a gloomy picture of India in the mind, and there was an impression that the success story of India is over. जो सक्सेस स्टोरी एक ज़माने में हम लोग की सरकार के समय में बिल्डअप हुई थी, अटल जी के समय में, then we told them that it is not truth. The success story of India is not over. It is waiting for BJP to come into power. And you have seen the moment Prime Minister Sri Narendra Modi became Prime Minister, the things have started transforming, changing to a totally new dimension, because that change was not for the change of the government, that change was for the epoch of a new era. वो परिवर्तन सत्ता के लिए नहीं था, वो परिवर्तन युगांतर के लिए था, और युगांतर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे मैं जब अभी बताया कि ओवरसीज बीजेपी की अब प्रेजेंस है, तो एक अलग आत्मीयता का भाव भी महसूस होता है। मुझे याद आता है कि जब हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था, तो मोदी जी के स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट करते हुए खूब टीवी डिबेट हो रही थी। हम लोग से कहते, देखिए साहब, आप तो जाके वहाँ इंडियन डायस्पोरा है, तो इंडिया के इलेक्शंस को, आप यूएस के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो मैंने जवाब दिया कि साहब उसका मीनिंग ये नहीं था, पर दूसरा मैंने कहा साहब अगर आपका ये इल्ज़ाम भी है तो मुझे तो ये इल्ज़ाम बड़ा हसीन इल्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि हम तो बचपन में सुनते थे कि अमेरिका इंडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडियंस अब अमेरिकन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं, तो आपको इस इल्ज़ाम पे गर्व का अनुभव करना है कि मोदी जी के आने के बाद यह बदलाव भी आया है, और बदलाव थोड़ा नहीं आया है। जो मैंने युगांतर की बात कही, जो एक्सपेंस हुआ है बीजेपी का टाइम एंड स्पैन में, आप देखें इन वेरियस स्टेट्स, जिस स्टेट में त्रिपुरा, जिसमें हम कभी नहीं थे, आज दोबारा आए। नोबडी कुड हैव इमेजिन्ड कि त्रिपुरा हमारे पास होगा। वेस्ट बंगाल में people used to say कि BJP got defeated. Then at the time I was not participating in the debate because I was in the hospital. I was got COVID affected severely. But a thought came in the mind, what they are talking about? Just 10 years back, in 2011, other than China, the biggest population under the left rule, if anywhere on the earth, it was West Bengal, and now they are totally wiped out. And you are saying that the BJP has lost. कांग्रेस साफ, लेफ्ट साफ, हरा साफ, लाल साफ, और लड़ाई इस बात की हो रही थी कि गहरे भगवे, या दूसरा कह रहा था हम भी हल्का भगवा है। और उसके बाद आपको लग रहा है कि ये बदलाव आपको बीजेपी की डिफीट नजर आ रहा है। 38% वोट। आई एम नॉट सेइंग इन द अदर कॉन्टेक्स्ट द political strategic manager of Trinamool Congress has himself given a statement. This is not my statement, this is neither the BJP statement, that our counting starts from 30%. अब इसका मीनिंग तो आप समझते हैं। If it is true, then the Trinamool Congress has got 48% vote and we have got 38. It means as per their point of view, they presume that we have got 38 out of 70 and they got 10 out of 70. So, though it is not my view, but मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ बदलाव बहुत आया है भारत में। आज बताइए, ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करती हैं, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करती हैं, केजरीवाल भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, और अखिलेश यादव को तो सपने में भगवान नजर आने लगते हैं। उसके बाद किसी को लगता है बदलाव नहीं हो रहा है। जनाब, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आती है। बट ये जो इंडिया का इमरजेंस शुरू हुआ, उसको मैं याद दिलाना चाहता हूं। सिंस आई केम इन ACYPL प्रोग्राम इन 2008 व्हेन प्रेसिडेंट ओबामा वाज running for his presidency,
I remember in 2010, in the month of October 2010, when President Obama came and addressed the joint session of Parliament, वैसे उसमें उन्होंने एक चीज़ और भी लिख दी थी, उसको पहले मेंशन कर दूं, बाद में बताता हूँ। उन्होंने एक किताब लिखी थी द प्रॉमिस लैंड, जिसमें उन्होंने रेफरेंस दिया था कि एज पर हिज टॉक्स with then Prime Minister Dr. Manmohan Singh, the UPA government has not taken strong action against Pakistan after 26/11, fearing that this may politically benefit BJP. अब अगर किसी में हिम्मत है तो ओबामा जी पे जाके मुकदमा कर दें, मगर सोच समझ के करना चाहिए। सब बहुत टेप करके भी रखते हैं वो लोग, इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए। बट उसी 2010 में आके ओबामा ने बोला था इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। व्हेन इंडिया हैज इमर्ज्ड, you know that emergence of India has a connection with today's date. आज क्या है? 11 मई 1998 भारत ने पोखरण एक्सप्लोजन किया था, वहां से इंडिया हैज इमर्ज्ड। और आपके थॉट्स कितने भी अच्छे हों, आपके विचार कितने अच्छे हों, जब तक आप शक्ति नहीं दिखाते, जो कहा गया है ना कि यह जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। और आप देखिए, आफ्टर पोखरण एक्सप्लोजन यूएस पुट बैन ऑन इंडिया, एंड इन लेस देन 2 years, that was 11th and 13th of May 1998, and in March 2000 Bill Clinton became the first US president to visit India for 5 days. ये था कि जब आप शक्ति आपकी दिखती है तो दुनिया आपको स्वीकार करती है। और हमने शक्ति कभी किसी के अगेंस्ट के लिए नहीं की, नो फर्स्ट यूज भी किया। अटल जी ने इतना करके दिखाया था, फिर मोदी जी आए तो उन्होंने क्या करके दिखाया? इन द लास्ट 60-70 years, इफ यू लुक एट द इंटायर ग्लोबल पॉलिटिक्स, हम इकलौते देश थे दुनिया के। वैसे कभी भी किसी में अगर पर्सनल लेवल पे सोसाइटी में भी लड़ाई होती है तो क्या होता है? छोटा और कमजोर कहता है कि ये बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। बट यहां हम दुनिया के इकलौते देश थे कि हम बड़े थे, हम ताकतवर थे, और हम ये गाना गाते थे कि छोटा और कमजोर हमको सता रहा है। और आपने देखा कि जब मोदी जी आए तो उन्होंने वो परिस्थिति में बदलाव किया कि द एरा ऑफ इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट बिकम ओवर। चाहे उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो, अब यह समझ में आ गया कि किसी भी प्रकार की सॉफ्टनेस नेशनल सिक्योरिटी पे संभव नहीं है। और ये एक बड़ा बदलाव आया, और बदलाव सिर्फ इतना नहीं आया कि पहली बार ये जवाब दिया हो। लोग कहेंगे कि 71 में भी हुआ था, वो एक अलग कहानी है, उसकी तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। परंतु मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान में पहली बार जानते क्या हुआ? पहली बार इन द पाकिस्तान नेशनल असेंबली द देन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज सेड, ये वर्ड्स हैं उनके, ये कुछ बालाकोट में जो किया था उससे ज्यादा खौफनाक करने जा रहे हैं। दिस वाज अ स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन। और याद करिए, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द नेशनल असेंबली हैज सेड, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि उस समय आर्मी चीफ आए और उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दीजिए वरना इंडिया अटैक कर देगा। दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट, दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑन देयर फ्लोर ऑफ हाउस। तो इतना बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए। अब बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको पावर मिली, उस पावर का कोई मतलब नहीं है जब तक गरीब आदमी तक वो विकास का प्रभाव नहीं पहुंचे। When मोदी जी came into power on 15th of August 2014, सबसे पहले क्या किया? जनधन योजना, the biggest financial inclusion, 42 crore people were included in the bank account. Then step by step, direct benefit transfer to everybody. Then house to everybody. Then the toilets to everybody. Then 6,000 rupees to every farmers. Then for poor people, the biggest challenge is their health, the medical expenditure. Then the Ayushman Yojana, so that everybody should get whatever is required. During the COVID time, 80 crore people got monthly free ration for more than 2 years. Now it is extended up to September of this year. और उसके बाद
बहुत से लोगों को हंगर इंडेक्स में इंडिया ज़्यादा नजर आता था, तो पता नहीं वो कौन से कोविड के दौर में जब सारी फ्लाइट्स भी बंद थी, ट्रेवलिंग भी बंद थी, वो किस फ्लाइट से गए और इंडिया के कौन से गांव में गए और कौन सा सर्वे किया, ये तो वही बता सकते हैं। खैर, अब मैं कहना चाहता हूं कि जब फर्स्ट स्टेज के ऊपर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैज गॉट सब्सटेंटिव रिक्वायरमेंट फॉर देयर livelihood, then also we have to look about what is required at the top level. The biggest change which Modi's government has brought was initiation of the defense production. You have ever thought that India was capable of making Chandrayaan, but not capable of making fighter planes? India was capable of making intermediate and long range ballistic missiles, but not capable of making the assault rifles. Does this thing sounds logical? No. ऐसा नहीं कि हम बना नहीं सकते थे, हम बनाना नहीं चाहते थे, ताकि खरीद फरोख्त होती रहे और बीच में जो कुछ और भी होना है वो भी होता रहे. So first time our government had decided that we should be self-reliant in defense production, और assault rifles बनने शुरू हो गई हैं both in the private and public sector. और you might have heard in the newspapers that for the first time BrahMos missile is being exported, and Philippines has become the first country who has booked an order for BrahMos missile, which will be totally indigenously manufactured in India. And incidentally, there are two defense corridors which have been built up, one in Uttar Pradesh and another in Tamil Nadu. अब ये ब्रह्मोस की एक फैक्ट्री लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में भी बनेगी. तो आप इमेजिन करिए, एक ज़माना था, मैं तो स्वयं उत्तर प्रदेश का हूँ, जहाँ उत्तर प्रदेश में कट्टे मैन्युफैक्चर होते थे और अब ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट होगी. ये कितना बड़ा बदलाव है, यह बदलाव हमें समझने की जरूरत है. When we talk about overseas BJP, तो हमें दोनों चीज़ें समझनी चाहिए कि what is BJP and what is overseas and what change has been brought in this government. When we talk about BJP, we are the only political party. जैसे अभी आपने कहा, आचार्य शाह साहब ने बढ़िया शेर सुनाया कि हम कभी अलग नहीं हुए. We are the only political party in the documented history of the country which has not seen even a single time vertical split in the 71 years. बाकी कांग्रेस 1885 में बनी, 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल में डिवाइड हो गई थी. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, उसके बाद छोड़िए जो कुछ हुआ वो तो पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत सारी बात है. मैं बचपन में सुनता था कि अटल जी आए, एक बार तो अपने भाषण में बोले, कहते कांग्रेस के तो इतने सारे टुकड़े हो जाते थे कि कांग्रेस एस, कांग्रेस आर, कांग्रेस के, कांग्रेस यू, उन्होंने कहा कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई. तो इतने फैक्शंस होते रहे और हम अनडिवाइडेड आज तक. दूसरा अंतर क्या है, बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तीन मेनली नेशनल पार्टी हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और बीजेपी. वैसे प्रैक्टिकली तो बीजेपी रह गई, कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं है. फिर भी टेक्निकली अगर बात करें तो कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885 बाय ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम. सो इट वॉज हैविंग a sizable British influence, originated by an outsider foreign element and consistently sustaining those elements. Up till now they are having a leadership of foreign origin. Communist Party, they never consider themselves as Indian. That's why if you even you check on the net, CPI's full form is not Indian Communist Party like Bharatiya Janata Party. Their full form is, even Congress says Bharatiya Rashtriya Congress. They say Communist Party of India. They consider themselves as an Indian branch of a multinational, totally originated from outside, and consider themselves as a branch of an outsider ideology, and founded in 1925 at the time of British rule. And now we are the only political party which is founded in independent India. And totally inspired by truly Indian values. And that's why we become the only political party which after this 75 years, जिसमें हम कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, we became the biggest party and first party to totally wipe out Congress and become a truly national party, because we represent the true national ethos. Because of Article 370, any constitutional amendment done by Parliament was not applicable in Kashmir until and unless its assembly adopts it.
and Kashmir Assembly never adopted this secular word. But वही सेकुलरिज्म का प्रतीक बन गया था. खैर, तो वो सेकुलर बना है 2019 में अगस्त में, जब वो यूनियन टेरिटरी बना. अब जो आपने बात कही कश्मीरी पंडितों के विषय में, सरकार ने पूरा प्रयास कर रही है, अभी तक ये बात सही है. ओनली 630 people have been shifted, and still what happened prior to our government, the previous government were insisting that they should come back to their original places, which was not possible because some of the places were burned, finished. हम लोगों का ये कहना था कि उनके लिए एक स्पेशल अलग एरिया बने जिसमें वो सिक्योर भी रहेंगे और उस ढंग से रहेगा. तो अब उस डायरेक्शन में काम होना शुरू हुआ है. तो एक काफ़ी बड़ा परिवर्तन कश्मीर में आया है, और अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिलता था वो भी मिलने लगा है. तो होपफुली आने वाले टाइम में और बड़ा चेंजेस हम लोग देखेंगे. Hello, I'm Dr. Sudhir Parikh. Here we have such a great meet and greet for Dr. Sudhanshu Trivedi. He is our national BJP spokesperson as well as member of parliament. And not only that, but he is a great debater, great orator, and very learned personality. Where everybody, all the university in the USA, they anxiously waiting for his knowledge and speech. So we welcome Dr. Sudhanshu Trivedi. Thank you. Thank you. It was a spectacular speech by Dr. Sudhanshu Trivedi. Being a national spokesperson, you rarely come across some people who are very well learned, intellectual, and today he had another function at Princeton University where he had floored all the PhD students, and he gave a speech on South Asia and the emergence of India post 2014. His points were all spot on, and he has given a cultural renaissance. So I would like to really congratulate OFBJP and ITV Gold and all the partners for covering this wonderful event. Thank you so much. Thank you so much for ITV's presence here tonight on such a wonderful occasion where we had the privilege of listening to Sudhanshu ji from India. He is such a wonderful speaker, and he has given us great insight into who we are as Indians abroad and what India represents in the global arena. Thank you. Actually, this is the 75th year of independence. ये स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का वर्ष है. तो भारत से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए ये एक अलग प्रकार के उत्साह को लेके आता है, और मुझे लगा कि यहाँ पे आकर मैंने देखा कि जो भारत में परिवर्तन हो रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा भारतवंशी समुदाय यानी इंडियन डायस्पोरा है उसने भी जो उन्नति की है वो निश्चित रूप से बहुत प्रेज़वर्दी है. और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जब हमारी शताब्दी होगी 25 साल के बाद, उसका लक्ष्य लेके चलना है. एंड आई होप कि अगर हमें शताब्दी पूरा होने तक भारत को जगत गुरु बनना है तो उसमें भारतवंशी समुदाय और जो अमेरिका का इंडियन डायस्पोरा है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है. Overseas Friends of BJP organized meet and greet with Dr. Sudhanshu Trivedi ji here in Edison. And more than 250 people joined here at the meeting, even though it's a short notice and also on a weekday. So he talked about how India has been transforming since 2014 under the leadership of Prime Minister Modi ji. It's changing culturally, diplomatically, and economically, and also defense-wise. It's a phenomenal change, and the people are very happy that there are so many changes that are happening, and and also he answered the NRI's questions mostly on the Kashmir and law and order situation and several other things that he answered, and it was an interactive session with the NRIs, and he mesmerized the NRIs with his speech. So it was a great program, and thank you for your support, and thank you for ITV and Sudhir Parikh ji. मेरा नाम विलास रेड्डी जम्बूला. I am OFBJP media co-convener. Today we had a good meet and greet with Dr. Sudhanshu Trivedi ji. He gave a lot of information how India developing and how is the Kashmir is developing and the Telugu states especially. He's giving all the information,
It's a really amazing. After Corona, many people today showed up, around 250 families. It's a really amazing program. Thank you so much, ITV.